Hello students, in this video we will discuss contravariant and covariant tensors or vectors and also mixed tensors, very important in mathematical physics for M.Sc Physics Semester 1 courses. It is lecture number 2 of mathematical physics for M.Sc Physics Semester 1 courses. First of all, we have to discuss contravariant tensors or contravariant vectors. A tensor is said to be contravariant if its upper index or upper indices, that is superscripts are used to represent the rank of tensor. जब किसी टेंसर में उसके इंडेक्स और इंडेक्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए सुपरस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट्स दैट इज अपर इंडिसेस का यूज किया जाता है, जिसके द्वारा उस टेंसर का रैंक की जानकारी ऑब्टेन होती है, तो उसे कंट्रावेरिएंट टेंसर कहा जाता है. ए कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1 is called contravariant vector. Write down, if the upper suffix or upper index or indices, that is superscript or superscripts are used to represent the ranks, represent the rank of that tensor. It is called, that tensor is called contravariant tensor. That tensor is called contravariant tensor. Now contravariant vector. contravariant टेंसर को ही contravariant वेक्टर कहा जाता है जब उस टेंसर का रैंक 1 हो. दैट इज a contravariant tensor of rank 1 is called contravariant vector. This is difference between contravariant tensor or a contravariant vector. Actually, contravariant vector is also a tensor of rank 1. So write down the definition of contravariant vector. A tensor of rank 1 is called contravariant vector. Contravariant vector. The transformation
equation or relation for the components of a contravariant tensor or a contravariant vector of rank 1 can be expressed as a bar or a dash prime system, a bar mu is equal to del x bar mu upon del x alpha is used as a superscript index. So a bar mu is equal to del x bar mu upon del x to the power alpha multiplied by a to the power alpha. Alpha is also used as a superscript index. And suppose it is equation number 1. This is transformation equation or transformation equation for a contravariant vector or contravariant tensor of rank 1. Contravariant tensor of rank 1 is called contravariant vector. So contravariant tensor of rank 1, that is contravariant vector, transforms like this: a bar mu equals to del x to the power minus mu upon del x to the power alpha multiplied by a to the power alpha, where a bar mu and a bar mu and a bar mu are a set of quantities a to the power I having values 1, 2, 3 to n, so on, 1, 2, 3 and so on n, in a system of variables x to the power mu. And these quantities have values a bar mu or a bar, suppose I, one of the values of I is mu. In other system of variables in which x bar mu is used. So if these quantities, that is quantities a bar I replaced by mu, in this case, obey the transformation like this, then the components of this tensor are called contravariant tensor of rank 1 or contravariant vector. Now transformation equation or transformation relation for contravariant tensor of rank 2 can be expressed as a bar mu nu, where a bar mu nu are the quantities have quantities in another system, that is prime system or bar system, while suppose
a small n square, a small n to the power 2 quantities, that is rank of tensor is a rate over the number of dimensions, n is the number of dimensions, and power 2 is the rank of a tensor. So suppose n square, n to the power 2 quantities, and that quantities are a mu nu. Mu and nu having values 1, 2, 3 to n, 1, 2, 3 and so on to n, that is n values, in a system of variable x mu. And these quantities, that is a mu nu, have values a bar mu nu in another system of variables x bar mu. If these quantities obey the transformation equation like a bar mu nu equals to del x bar mu upon del x alpha multiplied by del x bar mu upon del x beta multiplied by a multiplied by a alpha beta multiplied by a to the power alpha beta. Alpha and beta are the indices used as superscripts or upper indices. Alpha and beta are upper indices here. So this is the transformation relation for contravariant tensor of rank 2. If this relation is satisfied, then the components of this tensor, a to the power mu nu, are said to be the components of second rank, that is contravariant tensor of second rank or rank 2. Suppose it is equation number 2. This is the transformation relation for contravariant tensor of rank 2. Transformation relation for contravariant tensor of rank 2. तो जब n स्क्वायर क्वांटिटीज represented by a mu nu in one coordinate system, that is in a system of variables x mu, x to the power mu, x to the power mu, and these quantities have values a bar mu nu, that is, or a dash mu nu, that is prime system or bar system. Another system में n to the power 2 quantities a mu nu का वैल्यू a बार mu nu है, जबकि फर्स्ट सिस्टम में दो क्वांटिटीज का वैल्यू a mu nu है फर्स्ट सिस्टम में, एंड सेकेंड सिस्टम में दो क्वांटिटीज का वैल्यूज a बार mu nu है. तो यहां वन सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन अगर इस रिलेशन के अनुसार होता है a बार mu nu, a बार mu nu, both mu and nu are upper indices, that is superscripts. a and mu and nu are upper indices. जब किसी टेंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए अपर इंडिसेस का यूज होता है तो उसे कंट्रावेरिएंट टेंसर कहा जाता है. एंड कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1 इज कॉल्ड कंट्रावेरिएंट वेक्टर, जिसके लिए हमने रिलेशन इक्वेशन 1 में ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन को एक्सप्रेस किया, जो कि पार्शियल डिफरेंशिएशन
कोवेरिएंट वेक्टर के और कंट्रावेरिएंट वेक्टर के और कंट्रावेरिएंट टेंसर के कंपोनेंट्स कोऑर्डिनेट सिस्टम के में जिस ढंग से पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के पार्शियल डिफरेंशिएशन के जैसा ट्रांसफॉर्म होते हैं कंट्रावेरिएंट और ऑल्सो कोवेरिएंट वेक्टर्स और टेंसर के कंपोनेंट्स. And contravariant tensor of rank 2 के लिए ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन अगर फुलफिल होता है, ए बार म्यू न्यू इज इक्वल टू डेल एक्स बार टू द पावर माइनस म्यू अपॉन डेल एक्स टू द पावर अल्फा मल्टीप्लाइड बाई डेल एक्स दैट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल एक्स बार म्यू, यहाँ एक्स बार की जगह एक्स डैश भी यूज किया जा सकता है प्राइम सिस्टम में, अपॉन डेल एक्स टू द पावर बीटा इज ऑल्सो द अपर इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाई ए टू द पावर अल्फा एंड बीटा आर ऑल्सो अपर इंडिसेस because in a contravariant tensor upper indices are used. So this is the transformation relation for the components of contravariant tensor of rank 2. Mu and nu, which are used as the upper indices, both having values from 1 to 3 and so on to n. Similarly, we can transform contravariant. We can write transformation relation for contravariant tensor of rank 3. That is, we can express it as a bar mu nu and third upper index. Suppose it is sigma. So we can write transformation relation for a contravariant tensor for rank 3 and the transformation relation for the contravariant tensor of rank 3 or third rank can be expressed as a bar mu nu. Suppose third upper index is sigma liter is equals to a bar mu nu sigma. These are the quantities in the another coordinate system having variables x bar mu, while a mu nu sigma are the quantities in the first system of variables having variables x to the power mu and nu and sigma having values 1 2 3 and so on to n. So the transformation relation for the contravariant tensor of rank 3 can be expressed as a bar mu nu sigma equals to, again, partial derivatives, del x bar mu upon del x alpha multiplied by del x to the power minus nu upon del x to the power beta multiplied by third index is upper index is sigma. So it is del x bar minus del x bar to the power sigma. This is bar x bar or x prime x dash भी यूज किया जा सकता है. del x bar to the power nu. It is bar not minus, or primes x dash we can use it in place of bar, and del x bar
sigma to the power sigma upon del x, suppose del x to the power gamma, and multiplied by a alpha, beta and gamma. A to the power upper indices are alpha, beta and gamma. Alpha, beta and gamma. So in this case the components a, mu, nu are the contravariant tensor of rank 3. Suppose it is equation number 3. Now we have to discuss covariant tensors or covariant vectors. Write down. Covariant tensors or covariant vectors. If the lower index or indices, oblique indices, lower index or lower indices, that is subscript, either subscript or rank of tensor 1, oblique rank of tensor more than 1. So we can use subscripts, that is subscript oblique subscripts. Age oblique R सिंगल इंडेक्स है तो ईच रैंक 1 के लिए, एंड मोर देन रैंक 1 के लिए तो लोअर इंडिसेस और सब्सक्रिप्ट्स का यूज किया जाता है कंट्रावेरिएंट टेंसर को एक्सप्रेस करने के लिए. इफ द लोअर इंडेक्स ऑब्लिक इंडिसेस दैट और सब्सक्रिप्ट ऑब्लिक सब्सक्रिप्ट्स एज ऑब्लिक आर used to indicate or represent the rank of that tensor, then it is called covariant tensors. It is called covariant tensors. Covariant tensor. Covariant tensor of rank 1 is called covariant vector. Now we have to define covariant vector. Covariant vector the covariant tensor of rank 1 is called covariant vector.
Covariant vectors, the component or components of covariant vector of a covariant vector or covariant tensors can also be transformed as the transformed as the partial derivatives of partial differentiation of coordinate system. Now, transformation relation for a covariant vector can be expressed as, if this relation is satisfied, then that vector is said to be covariant vector, that is components of that vector is said to be, और that vector is said to be covariant vector. यदि यह रिलेशन सेटिस्फाई होता है तो जिस रिलेशन को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, ए बार म्यू म्यू इन म्यू इज म्यू is used as mu is used as lower index और ए सबस्क्रिप्ट. यहां पर म्यू को नीचे रखना होगा, ए बार के नीचे में यूज करना होगा लोअर इंडेक्स के रूप में, तो उसे कोवेरिएंट कहा जाता है. दैट इज सबस्क्रिप्ट के रूप में अगर इंडेक्स का यूज होता है तो उस टेंसर को कोवेरिएंट टेंसर कहा जाता है. एंड कोवेरिएंट टेंसर रैंक 1 का हो तो उसे कोवेरिएंट वेक्टर कहा जाता है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कोवेरिएंट टेंसर एंड ए कोवेरिएंट वेक्टर. एक्चुअली कोवेरिएंट वेक्टर इज आल्सो ए कोवेरिएंट टेंसर बट ऑफ रैंक 1. एंड एक से अधिक रैंक का होगा जब टेंसर, तो उसे एक से अधिक रैंक का कोवेरिएंट टेंसर होगा, माने कोवेरिएंट टेंसर होगा. दैट मीन्स दैट मीन्स किसी टेंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए यदि लोअर इंडिसेस और सबस्क्रिप्ट का यूज किया जाता है for to represent tensor of more than rank 1, then those tensors are called covariant tensors. तो कोवेरिएंट टेंसर को और कोवेरिएंट वेक्टर को, कोवेरिएंट टेंसर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए लोअर इंडिसेस और सबस्क्रिप्ट का यूज किया जाता है, जबकि कंट्रावेरिएंट टेंसर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अपर इंडिसेस और सुपरस्क्रिप्ट का यूज किया जाता है. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंट्रावेरिएंट टेंसर एंड कोवेरिएंट टेंसर. सो द ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन फॉर ए कोवेरिएंट वेक्टर, दैट इज ए कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1, इज ट्रांसफॉर्मेशन relation for a covariant vector is a bar mu is is the lower index और a subscript ए को नीचे रिप्रेजेंट, म्यू को नीचे रिप्रेजेंट किया गया है. एंड ए बार तो ए बार और ए डैश वी कैन यूज इट एज ए डैश ऑल्सो. दिस इज द ए सेट ऑफ क्वांटिटीज इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स बार म्यू, while a mu is a set of quantities in the first coordinate system. So the transformation relation is a bar lower index mu equals to del x to the power alpha upon del x bar mu multiplied by a to the power alpha.
तो अगर इस ढंग से ट्रांसफॉर्मेशन हो, ए बार लोअर इंडेक्स म्यू इक्वल्स टू डेल एक्स टू द पावर अल्फा अपॉन डेल एक्स बार म्यू मल्टीप्लाइड बाई ए टू द पावर अल्फा. अल्फा index alpha is also used as the subscript or lower index. तो जब लोअर इंडेक्स का यूज किया जाता है किसी टेंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए या टेंसर के रैंक को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इसे कोवेरिएंट टेंसर कहा जाता है. एंड कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1, यहाँ केवल एक ही इंडेक्स का यूज किया गया है, लोअर इंडेक्स का, तो इसे यह रैंक 1 का टेंसर है जिसे कोवेरिएंट वेक्टर कहा जाता है. तो ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन फॉर द कोवेरिएंट वेक्टर, दैट इज ए कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1 इज लाइक दिस. नाउ वी कैन also write transformation relation for a covariant tensor of rank 2, and we can express it as, write down, for transformation relation for covariant tensor, for a covariant tensor of rank 2 or second rank for a to the power 2 quantities, say a mu and nu having values 1, 2, 3 to n. Mu and nu are lower indices. So we can write the transformation relation for a covariant tensor of rank 2 as a bar lower indices mu and nu. There are two indices. Lower indices are used to represent covariant tensor. Covariant tensor को रिप्रेजेंट करने के लिए लोअर इंडिसेस का यूज किया जाता है. तो यहाँ पर म्यू एंड न्यू एक्स बार म्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्वांटिटीज हैं, वेरिएबल्स हैं. म्यू एंड न्यू का वैल्यूज 1, 2, 3 टू लेकर 1, 2, 3 टू n तक हो सकता है. तो ए बार म्यू न्यू इज इक्वल टू डेल एक्स टू द पावर अल्फा अपॉन डेल एक्स बार म्यू multiplied by del x to the power beta upon del x bar nu multiplied by a to the power alpha beta as lower indices. A to the power alpha beta are lower indices और सबस्क्रिप्ट्स. नीचे कोवेरिएंट टेंसर में लोअर इंडिसेस का यूज किया जाता है, कंट्रावेरिएंट टेंसर में अपर इंडिसेस का यूज किया जाता है. तो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन फॉर ए कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2. If this relation is satisfied, that is, if the components of covariant tensor a mu nu will follow this relation, then it is known as the covariant tensor of rank 2 or second rank. Suppose it is equation number 2 for this case, that is for covariant vectors, covariant vector or covariant tensors. Similarly, we can write transformation relation for a covariant tensor of more than rank 2, that is rank 3, rank 4. We can express like similar fashion as expressed in equation number 2. Now, in last we have to discuss
mixed tensor. A mixed tensor a mixed tensor in a mixed tensor, upper and lower both indices are used. That is superscript and subscript, or superscripts and subscripts indices are used to represent a mixed tensor or to indicate the rank of the tensor, that is mixed tensor. So in last number 3, mixed tensor, if upper and lower indices or superscripts, अपर इंडेक्स को और इंडिसेस को सुपरस्क्रिप्ट कहा जाता है. Either superscript or superscripts for more than one index. Superscripts and subscripts, subscript or oblique subscripts are used to represent the rank of a tensor. It is called a mixed tensor. जब किसी टेंसर में लोअर इंडेक्स और इंडिसेस और अपर इंडेक्स और इंडिसेस का यूज किया जाता है, दैट इज सुपरस्क्रिप्ट्स एंड सबस्क्रिप्ट्स दोनों का यूज किया जाता है किसी टेंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसे मिक्स्ड टेंसर कहा जाता है. द ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन फॉर ए मिक्स्ड टेंसर having n to the power 2, that is n square quantities, where n represents number of dimensions, number of variables, and the power 2 is the represent the rank of that tensor. So if n to the power 2, n square quantities, suppose a mu nu, a to the power mu as upper index and nu as lower index, that is mu as superscript and nu as subscript. So if n square quantities a mu nu is in a system of variables x to the power nu are related to other n square n to the power 2 quantities, a bar mu as the upper index and nu as the lower index, and it is in another system of variables, that is x bar mu. Then transformation relation for the mixed tensor a mu nu, a to the power mu upper index while nu as the lower index. So the transport if n square quantities, that is mu, that is a mu nu in a system of variables x to the power mu are related to other n square quantities, a bar mu as upper index, nu as lower index, in another system of variables x bar mu, by the transformation relation a bar, that transformation relation for a mixed tensor is transformation relation for a mixed tensor
is given by a bar और a dash prime system, another system coordinate system में variables हैं. a bar mu as a upper index, that is a superscript, and mu as the lower index or subscript. We can write it as del partial differentiation, partial derivative, del x bar mu upon del x to the power alpha for the contravariant index, and for covariant index, which is mu. Contravariant index is mu. Contravariant index, upper index is mu, while covariant index, lower index is nu. So it is del x for covariant index. We can write del x beta in the numerator, and in the denominator it is del x bar to the power nu. उल्टा हो जाता है कोवेरिएंट टेंसर के लिए. तो it is, we have a bar mu upper index, mu upper index as a superscript and mu as subscript is equal to del x bar to the power del x bar to the power mu upon del x alpha for the contravariant or the upper indices, upper index mu. We can write del x bar mu upon del x alpha, del x to the power alpha multiplied by, for mu lower index or covariant index mu, we can write del x to the power beta upon del x bar to the power nu multiplied by a to the power alpha upper index, and beta as the covariant position, that is subscript or lower index beta. Then the quantities a mu nu, a to the power mu upper index and lower index nu, are said to be the components of a mixed tensor of rank 2, if this relation is satisfied. Now we can write the transformation relations for the mixed tensors of more than rank 2 as the similar fashion. Similarly, we can write the transformation relation for mixed tensors of more than rank 2 or more than second rank. Now this video is completed. Thanks all of you for watching my YouTube channel, Physics Quantum Classes. There is a correction in the transformation relation for a mixed tensor. The position of index nu will be as subscript, that is nu is placed as a subscript or lower index for a covariant tensor. So the transformation relation for a mixed tensor is a bar mu as a upper index and nu as a lower index, or mu as a superscript and nu as a subscript is equal to del x bar to the power mu upon del x alpha multiplied by del x to the power beta upon del x bar lower index nu, that is as index nu is used in the covariant position, that is as a subscript multiplied by a to the power alpha as
the upper index and beta as a lower index. Thanks all of you.